Good morning, students. This is the video on skills of micro teaching. This video will be very useful for both B.Ed students and D.El.Ed students who are supposed to go for the teaching practice. Before going for the teaching practice, you have to know about the different skills which we use during the teaching process. जो भी कौशल हम यूज़ करते हैं अपने शिक्षण के प्रोसेस के दौरान, उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है. सारे स्किल्स क्या होते हैं, प्लस उन्हें कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वहाँ उसे अप्लाई करते हैं. सो दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन दैट. In my previous video, I have given the theoretical portion of micro teaching. Here we are going to understand about the different skills of micro teaching one by one. So let us study. So first of all, teaching skills. शिक्षण कौशल किसे बोलते हैं? शिक्षण कौशल वैसे behaviors है, और you can say as a set of teacher behavior which are especially effective in bringing about the desired changes in people teachers. The activities and behaviors that facilitate learning in students are called teaching skills. टीचिंग स्किल्स वो एक्टिविटीज़ और बिहेवियर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ने में मदद करते हैं. इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स. वॉट एवर टेक्निक्स और प्रोसीजर्स या इंस्ट्रक्शन विच आर यूजिंग इन द टीचिंग ड्यूरिंग आवर टीचिंग इन क्लासरूम, दोज आर नोन एज टीचिंग स्किल्स. So these are the different teaching skills: skill of introduction, skill of explaining, skill of questioning, skill of demonstration, skill of reinforcement, skill of closure, skill of stimulus variation, and skill of blackboard. So today I am going to discuss only two skills, that is skill of introduction and skill of explanation, so that it will be clear to you. So first one is skill of introducing a lesson, or it is also known as set induction, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना कौशल. प्रस्तावना कौशल, this or skill of introduction is very important as this is the beginning of your class. You do this whenever you are going to begin your class. So skill of introducing involves establishing rapport with the learners, promoting their attention and exposing them to essential content. Learning a new lesson is influenced by the process in which the lesson is introduced. जिस तरीके से आप लेसन इंट्रोड्यूस करोगे इस पे बहुत डिपेंड करता है बच्चे का न्यू लेसन के लिए मोटिवेट होना या इंटरेस्ट जागना. सो योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इफेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड each and every skill has their particular components, so we will study about those components also. Components, first one is मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स. जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो हमें बच्चे के प्रीवियस नॉलेज का मैक्सिमम यूज़ करना है, सो दैट बच्चे जो है प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक कर सके. हमें कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे कि वो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक कर सके. सो यू विल हैव टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज. नेक्स्ट वन इज यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस. यहाँ पर डिवाइस का मतलब होता है जो भी हम टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं या टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए. इट शुड ऐसा होना चाहिए जो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़े. वहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, रोल प्ले करा सकते हो, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से कर सकते हो इंट्रोडक्शन, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो. तो दीज आर द अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट यू कैन यूज़ द डिफरेंट डिवाइसेस. थर्ड कंपोनेंट इज़ मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी. वहाँ पे कंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब कि एक लॉजिकल वे में होना चाहिए. रेलेवेंसी ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर. आप जो भी वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर शो करो इट शुड बी वेरी रेलेवेंट. यू शुड टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज, यूटिलाइज द पास्ट एक्सपीरियंसेस. नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन यू हैव टू मेक इट क्लियर टू द स्टूडेंट्स. You have to arouse interest among the students by telling a story, by enthusiasm, by introducing a surprise. आपको ऐसा कुछ करना है जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो न्यू टॉपिक को पढ़ने के लिए. मीन्स इन समरी, इन शॉर्ट यू कैन से इट शुड बी वेरी इफेक्टिव. नेक्स्ट, सेकेंड स्किल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, दैट इज़ व्याख्या कौशल. अभी व्याख्या कौशल क्या है? व्याख्या करना मतलब हम जो कॉन्सेप्ट देने वाले हैं बच्चों को उससे पूरी तरह से क्लियर करना. मतलब कि हमारा जो पूरा एक्सप्लेनेशन जो पार्ट आता है वो होता है एक्सप्लेनेशन स्किल. अब वो कैसा होना चाहिए? सो एक्सप्लेनिंग इज़ एन एक्टिविटी विच शोज अ रिलेशनशिप अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, इवेंट्स और फिनोमेना ड्यूरिंग टीचिंग इन अ क्लासरूम.
An explanation is a set of interrelated statements elaborating a concept being taught or learned. ये explanation क्या है? ये interrelated statements है जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट को बच्चे को elaborate करता है. ठीक है. So the skill of explaining is defined as an act of bringing about an understanding in someone about a concept, a principle or a phenomenon. Explaining is essentially a verbal skill. यहाँ पे mainly verbal ही होता है and has two main aspects: selection of appropriate statements, interrelating and using the selected statement. हम जो भी statement select की हैं उसे किस तरह से हम use कर रहे हैं. So now let us come to the components of explaining skill: desirable and undesirable behavior. So we will study one by one all the behaviors. फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब जो आप फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप देने वाले हो एक्सप्लेनेशन के लिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का अटेंशन को ड्रॉ करे, मेंटेन करे और पूरे एक्सप्लेनेशन का एक ओवरऑल पिक्चर दे दें. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यानी कि आपके एक्सप्लेनेशन का जो लास्ट स्टेटमेंट होगा. यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स. आप जो भी एक्सप्लेन करने वाले हो वहाँ पे आपको लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करना है. यू कैन यूज़ कंजंक्शंस, यू कैन यूज़ प्रीपोजिशंस. Next is use of visual techniques. This is very important component of explanation skill that one picture is worth 10,000 words. So एक picture जो है वो 10,000 word के बराबर होता है. That's why you try to use more and more visual aids. For example, blackboard, charts, model, etc. Technical words defined. You have to go on defining the technical words which comes in the middle so that it becomes easy for students to understand. Interesting to students. You have to make your topic interesting by giving the examples from day to day life or using simple sentences. So जितना simple होगा बच्चे उतना ही इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतने इंटरेस्टिंग उसको समझेंगे. नेक्स्ट इज टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग. अब ऐसा नहीं करना है कि हम पढ़ाते जा रहे हैं. वी हैव टू कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस इन द मिडिल. अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हमें पूछना है, सिंपल क्वेश्चन पूछना है सो दैट बच्चे एक आंसर दे सके. Now undesirable behavior में आता है पहला irrelevant statement. We are not supposed to use any irrelevant statement related to topic which creates confusion. So आपको पूरे अच्छे से तैयारी करके जाना है कि ताकि आप वहाँ पे कोई ऐसा statement नहीं पूछो बोल दो जो confusion create करे. Lack of continuity. आप जो भी दे रहे हो ideas, it should be in a logical way, it should be in a sequence. Lack of fluency. Teacher has to speak clearly. Don't use incomplete and half sentence. Use of vague words and phrases. You are not supposed to use any vague words such as may, actually, perhaps, you know. Why? Because these types of words do not give the exact idea about the concept. So you are not supposed to use these kinds of words which creates confusion. So this was use of vague words. So this is all about skill of introduction and skill of explanation. Girls, please go through these two skills. If you have any queries, please write the question in the comment box or you can message me personally. I will solve those questions and in my next video I will move on to the next different skills. Thank you.